Hi dear students, let's see this question that came in JEE Advanced Paper-1 Physics in the year 2021. The question is from the topic of hydrogen spectrum. Not a very difficult question. This required simple calculations and most of the students would have done this quite easily. Although one of the options was good, but yes, like again students would have figured out that as well. Let's see what's happening over here. The ratio of the, so basically in the hydrogen spectrum, the ratio of the longest wavelength to the shortest wavelength in the Balmer series. So if you want to find the longest wavelength, so basically we can say that 1 by lambda will be equals to Rydberg's constant into z square. Z will be 1 for hydrogen. For Balmer, the longest wavelength will be smallest energy. That means from when the transition happens from 1 equals to, n equals to 3, say n equals to 2. That will be 1 by 4 minus 1 by 9. Okay, so this will be lambda smallest energy, that means longest wavelength, and we can say 1 by lambda shortest will be equals to rz square. This will happen when the transition happens from infinity to n equals to 2. That will be 1 by 4 minus 1 by infinite. So we have to take the ratios, so we can say that this upon this, second upon first, will become lambda l upon lambda s. So this will become rz square will cancel out. This will become 1 by 4 upon 9 minus 4 is 5 by 36, right? So this becomes 9 is to 5, and hence option A is correct. There is an overlap between the wavelength ranges of Balmer and Paschen series. Okay, that means we have to talk about the over whether there's a whether they overlap or not, Balmer and Paschen series. Now it's very easy to see. If the wavelength will overlap, then energies will also overlap because hc by lambda is the energy. Okay, so let's find the smallest possible energy of Balmer. Okay, so smallest possible energy of Balmer, E smallest of Balmer will be 13.6 into 1 by 4 minus 1 by 9. Again, the smallest energy will be when the transition happens from 1 by from n equals to 3, say n equals to 2, right? So what is this? 13.6 into 9 minus 4 is 5 upon 36. This is the smallest possible energy of Balmer. What is the largest possible energy of Paschen? What is the largest possible energy of Paschen? Largest possible energy of Paschen. So largest energy of the Paschen is when the transition happens from infinity to 3. So that is 13.6 into 1 upon 9. Okay. Now if you see, then smallest possible energy of Balmer is more than largest possible energy of Paschen. Okay. Because this you can, like, this is 4 by 36. You can write 1 by 9 as 4 by 36. So बामर का स्मॉलेस्ट पास्चन के लार्जेस्ट से ज्यादा है, इसका मतलब एनर्जी में तो कोई ओवरलैप है नहीं, देयरफॉर वेवलेंथ में भी कोई ओवरलैप नहीं होगा, तो बी इज रॉन्ग. The wavelength of the Lyman series are given by 1 by 1 plus 1 by n square lambda naught, where lambda naught is the shortest wavelength of Lyman series and m is an integer. एक्चुअली ये ऑप्शन काफी अच्छा था, बट आईआईटी ने थोड़ा सा, मतलब आईआईटी ने अभी तो अच्छा नहीं है, बट आईआईटी अगर चाहता तो उसको अच्छा ऑप्शन बना सकता था. अगर ये m स्क्वायर की जगह m दे देते तो काफी अच्छा ऑप्शन होता है. लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग ओवर हियर. वेवलेंथ ऑफ द लाइमन सीरीज को इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, वेयर लैम्डा नॉट इज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ द लाइमन सीरीज. ओके, तो लाइमन जैसे लाइमन सीरीज के लिए क्या होगा, व्हेन द ट्रांजिशन हैपेंस फ्रॉम जनरल n टू 1, so we can say that hc upon lambda of Lyman will be equals to hc upon hc की जरूरत नहीं है, ठीक है. 1 upon lambda of Lyman is equals to 1 upon lambda naught, ठीक है, into 1 minus 1 upon n square, right? So when the transition happens from n equals to infinity to n equals to 1, then we can write like this. Okay, now if you take the reciprocal, so lambda will become lambda naught into n square upon n square minus 1. Okay, now वैसे तो यहाँ से अपन बहुत बार, मतलब कुछ बच्चों ने बोल दिया यहीं से देख के कि ये उस फॉर्म में कन्वर्टेबल नहीं है, ठीक है. अब इसको थोड़ा सा और अपन
अगर मैनिपुलेट करें तो न्यूमरेटर में -1 + 1 लिख सकते हैं, राइट. So this will become lambda naught into 1 plus 1 upon n square minus 1. So this is lambda L. Now see, अब जैसे यहाँ पे n की वैल्यू अपन 2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा. ठीक है, हमें किससे कंपेयर करना है, लैम्डा नॉट इंटू 1 + 1/m स्क्वायर, राइट. इससे कंपेयर करना है m स्क्वायर से. तो अगर हम यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखें, सॉरी 2 रखें, तो कितना हो जाएगा 3. m इंटीजर है, सॉरी अगर m स्क्वायर की वैल्यू 3 हो रही है तो m√3 बन जाएगा. सो m इंटीजर नहीं रहेगा. बट वही मैं कह रहा हूँ, अगर यहाँ पे आईटी ने m दे दिया होता, ठीक है, अगर आईटी ने m दे दिया होता तो इट वुड हैव बिकम अ वेरी गुड ऑप्शन, देन दिस वुड हैव बिकम करेक्ट. तभी ऑप्शन सही हो जाता, ऑप्शन सी. ठीक है, बट बहुत सारे बच्चों ने इसको मतलब ढंग से नहीं प्रोसेस किया होता और वो ऑप्शन ये छोड़ के आते, बट सी ऑप्शन सही हो जाता अगर यहाँ पे m स्क्वायर की जगह m आता तो, राइट. बट राइट नाउ दिस इज नॉट करेक्ट बिकॉज ये इंटीजर नहीं बन रहा है, and hence we can say that this is wrong. The wavelength ranges of Lyman and Balmer series do not overlap. ये भी अपन उसी लॉजिक से देख सकते हैं. अगेन अगर वेवलेंथ ओवरलैप करेंगे तो एनर्जी भी ओवरलैप करेगी. तो एनर्जी ऑफ बामर हाईएस्ट, हाईएस्ट कितनी होगी, दैट विल बी 13.6 into when the transition happens from infinity to 2, so that will be 1/4. ठीक है, एंड लाइमन की स्मॉलेस्ट एनर्जी कितनी होगी, लाइमन की स्मॉलेस्ट, S means smallest, तो स्मॉलेस्ट एनर्जी कितनी होगी when the transition happens from 2 to 1, 13.6, तो 1 minus 1/4, right. So this will be 13.6 into 3/4. So as you can see कि there is no overlap, क्योंकि बामर की हाईएस्ट एनर्जी लाइमन की स्मॉलेस्ट से कम है, therefore energies can never overlap and hence there will be no overlap in the wavelengths as well. Therefore option D is correct. So according to me, correct answer will be A and D. I hope you would have understood. That's it. Thank you.